Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is Dr. Prasanjit, currently JR3 in the Department of Pharmacology, AIMS Kalyani, and I'm back with another tutorial. So this is basically the follow-up class for the previous two classes where I have discussed about the effects of drugs and intervention on dog. There was one. So in this tutorial, you can see that I have opened the EPDoc software, and so I'm going to demonstrate how to perform those experiments in this video. So it will not be having any explanation. You will you will just be able to note down the steps how you are going to perform the particular experiment. Though I have already explained that in detail, but here you will get the live demonstration actually. So first, let's begin with the first topic, that is effect of carotid artery occlusion. So as you can see here, when I scroll down with the mouse, you can go to the other drugs. And now at this point of time, this is in the exam mode. So this is the mode in which you will be provided this software, and then you will have to perform the experiment based on the questions provided to you. So first, we are going to see the effect of carotid artery occlusion. So carotid artery occlusion, we are going to select it, carotid artery occlusion, and then you can see the image has changed here when we have clicked on carotid artery occlusion. Then for central vagus, you can see the image is different. So similarly, when we will click on carotid artery occlusion, and then we will click on the inject button, though it is not a drug, but still we are going to click the inject button, and then we'll see the effect. Okay, so let's see what happens. Okay, so as you have already seen, when the carotid arteries are occluded, it leads to increase in the mean arterial blood pressure, and there is increase in the heart rate also. Okay, and the reason behind this is what I have already mentioned, that is the baroreceptor reflex. Okay, so I'm not going to discuss that once again, but just to be on the safer side, you can just understand this because this is because of the baroreceptor reflex. There is pseudo hypotension. As a result, there is increase in the heart rate. Okay, and then there is an increase in the heart rate, and whenever there is an increase in the heart rate, so it automatically leads to increase in cardiac output, leading to increase in the systolic blood pressure. So that is how we get this. Now let's go to new. Okay, so whenever you are going to click new in the exam mode, you will not be able to go back to the new slide. This is why, because the password will be set. But since I'm showing you guys, so I already know what is the password for this. So I'll just type in the password so that I can show you the next interventions. So this is the new one again. Now let's see for central vagus. Okay, so we are going to click on this central vagus, and then again we will be clicking on the inject button. Okay, so you know the effect. I'm not going to discuss that because I have already covered that in the previous videos. You can click on the I button to check out those videos. Okay, now next is effect of peripheral vagus stimulation. So I can show you the particular effect in this slide only instead of going back to the new one. So you can just see here. I will just before that, let's select peripheral vagus now. Okay, so I have selected peripheral vagus, and then now you can see this is the effect of peripheral vagus stimulation. Okay, so that is what you get. You will not get this thing because here I am doing both the things together. So that is the reason why you are getting two peaks, one going upwards and the other one going downwards. In the tutorial, in the exam session, you will be asked only one particular thing, either this one or the either peripheral vagus or the central vagus. Actually, you won't be asked this also because mainly the questions are more concerned regarding the drugs. So now let's go to the effect of agonists. So I will just click on the new once again. So now let's demonstrate the effects of agonist. So for this, first we need to know which amongst these are agonist. So let's see one by one. Epinephrine, yes, it is agonist. You know, when we select epinephrine, see, I am not altering the dose at all because for these cases, you don't have to remember the dose. There are only two specific questions where you need to remember the dose. If you remember, one was the competitive antagonism, and the other one was nicotinic action of acetylcholine. So for that, I will be showing you how to change the dose. So here just we have to demonstrate the effect of agonists. Okay, so first is epinephrine. So we'll select epinephrine. The default dose is already selected here, and then you will click on inject. What you will get biphasic response. So let's see whether we are getting biphasic response. Yes, we have the biphasic response here. Okay, now next agonist is norepinephrine. What do you expect in norepinephrine?
there will be biphasic response? No, there won't be any biphasic response. Let's see what happens when we inject norepinephrine. Okay, so here you can see there is increase in the mean arterial blood pressure and there is decrease in the heart rate. Okay, then next agonist is isoprenaline. We know isoprenaline is beta 1 and beta 2 agonist. Okay, so let's see what it does. It is going to obviously going to decrease the mean arterial blood pressure. So we will inject isoprenaline and there you go, you can see that. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि isoprenaline ने मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कम कर दिया है, ठीक है. So it is causing hypotension. Then we have acetylcholine. In this also we are going to get almost a similar effect, but the effect will be evanescent. Why? Because acetylcholine gets metabolized very easily in the body by the cholinesterase enzymes. So let's select acetylcholine. Again we'll inject. तो ये देख रहे हो आप, ये रिस्पॉन्स देख रहे हो, ये फॉल इन ब्लड प्रेशर है, बट इट इज फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे देखो ज़्यादा ड्यूरेशन है. नेक्स्ट आते हैं हिस्टामिन में. सो हिस्टामिन जो है ये भी वासोडिलेशन करेगा. एज अ रिजल्ट इट विल आल्सो कॉज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. लेट्स सी. यस, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. So with this we have completed all the agonists on this side. Now let's slide it to the other side and we will see there are few more agonists left. यहाँ पे देखते हैं और agonist है कि नहीं. हाँ, yes, one agonist is left, that is ephedrine, that is mixed acting type. So we'll select this and then again inject. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है क्योंकि ये नॉन कैटेकोलामीन है. सो इसका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लोअर होगा when compared to norepinephrine and epinephrine, and that is the reason why the duration of action is more. So with this we have completed all the agonists. First epinephrine में biphasic response, then we have given norepinephrine. Isoprenaline में fall in blood pressure, acetylcholine, histamine दोनों में fall in blood pressure, and then again ephedrine which is having a longer duration because it is a non-catecholamine, so it is being degraded. It is degraded slowly in the body by the enzymes, that is basically ammonium oxidase and the catechol-O-methyl transferase, which are responsible for the metabolism of the normal catecholamines, that is epinephrine and norepinephrine. So with this we have completed the effect of agonists. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट्स. ओके, सो इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट आपको पता है, जब भी आपको एंटागोनिस्ट का इफेक्ट दिखाना है तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ता है, पहले आपको देना पड़ेगा एगोनिस्ट, देन आप फिर से दोगे एंटागोनिस्ट, देन इन द थर्ड स्टेप अगेन यू आर गोइंग टू गिव what agonist. So when you don't see the effect of agonist after the administration of antagonist, then you can say this is the function of this particular antagonist. So let's see the effect of antagonist one by one. तो सबसे पहले तो यहाँ में फेंटोलामीन है, लेकिन लेट्स टेक अ न्यू. And I am not giving the saline in between because you know after administration of every drug you have to give saline. So I am just avoiding that step here uh, for actually the completion of the video quite earlier, so you don't have to waste time. You just remember for uh, every administration of drug following that you have to give saline. Okay, that is what we have done, but here we are not doing that for the time being. Now let's take the new one again. So effect of antagonist, यहाँ पे एक भी antagonist नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ. Let's slide it to the right side. Yes, so first we have phentolamine. ठीक है, तो phentolamine जो है antagonist है. ये क्या एंटागोनिस्ट है? इट इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, राइट. सो अगर हमें इसका इफेक्ट देखना है तो हमें पहले एगोनिस्ट देना होगा जो एक अल्फा एगोनिस्ट है. तो हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट काफी सारे हैं. वी हैव एपिनेफ्रिन, वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन. So let's take any of these because whenever you're asked to demonstrate the effect of an antagonist, you can take any of the agonist. Okay, so I'll just select norepinephrine for the time being. Okay, and then you are going to inject norepinephrine. ठीक है, उसके बाद आप दोगे फेंटोलामिन. You see, for phentolamine, now there is a fall in blood pressure. Okay. Now let's go back again. And now when we are giving norepinephrine, we should not get increase in the mean arterial blood pressure. And that is how we will demonstrate the effect of phentolamine. Let's see. We are selecting norepinephrine and then we are injecting it. तो आपने देखा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे पहले क्या था, इंक्रीज इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर था. So this means we have demonstrated the effect of phentolamine, which is an alpha blocker, non-selective alpha blocker. So now let's go to the next antagonist. So इसके बाद देखते हैं कौन सा next antagonist है. We are having propranolol. Okay. So propranolol is non-selective beta blocker. So यहाँ पे हम अगर हमें agonist देना है तो we can go with isoprenaline. और आप यहाँ पे epinephrine भी दे सकते हो क्योंकि epinephrine is also going to act on beta 2 receptor. But let's go with isoprenaline क्योंकि isoprenaline जो है mainly it is going to act on beta 1 and beta 2 receptors. So let's try isoprenaline only.
सो सबसे पहले हमने आइसोप्रिनलिन सेलेक्ट किया। जब भी आपको फिर से दूसरा एंटागोनिस्ट का इफेक्ट दिखाना है तो आपको न्यू करना पड़ेगा। सो इन एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, बट नाउ सिंस आई एम डिस्कसिंग ऑल टुगेदर, सो आई एम जस्ट शोइंग इट वन बाय वन हियर। ओके, सो फर्स्ट हम दे रहे हैं आइसोप्रिनलिन, फर्स्ट जो है एगोनिस्ट देंगे। सो आइसोप्रिनलिन देने के बाद एज यू कैन सी द एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स दैट इज फॉल इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम देंगे ब्लॉकर दैट इज propranolol. Remember, we are trying to demonstrate the action of propranolol. Okay, so propranolol is the non-selective beta blocker. So हमने इसको select किया and then we have injected propranolol. Okay, good. Then next what we are going to do, again we are going to inject isoprenalin. देखते हैं क्या response आता है या नहीं। So आपने यहाँ पे देख सकते हो आप, there is no response now with isoprenalin, जबकि पहले there was fall in blood pressure, but अब यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है। So this means we have again demonstrated the effect of propranolol. तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंटागोनिस्ट। अब आते हैं एट्रोपिन। ओके, सो एट्रोपिन आपको पता है कौन सा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला है। इट इज गोइंग टू ब्लॉक द मस्कैनिक रिसेप्टर्स M1 M2 M3। और हमारे पास ऐसा कौन सा एगोनिस्ट है जो M1 M2 M3 पे एक्ट करेगा। सो वी हैव एसिटाइलकोलिन, राइट। तो एसिटाइलकोलिन को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इंजेक्ट, देन अगेन वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, वी आर गोइंग टू गेट इवेनेसेंट रिस्पॉन्स बट फॉल इन ब्लड प्रेशर, फॉल इन हार्ट रेट। ओके, लेट्स सी, yes, fall in blood pressure, fall in heart rate. Next we are going to demonstrate the effect of antagonist, तो हम select करेंगे atropine and then we are going to inject atropine. ओके, डन। उसके बाद हम देंगे फिर से एसिटाइलकोलिन, बट इस टाइम हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपको वो इवेनेसेंट रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एसिटाइलकोलिन का। सो दिस मीन्स वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। और जब आप कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करोगे तो इन दैट केस यू विल हैव टू रिमेंबर द डोज। आई विल डिस्कस दैट इन द अपकमिंग फ्यू मिनट्स। ओके, सो वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑल्सो। अब इसके बाद जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो यहाँ पे हमारे पास है मेपाइरामिन विच इज एन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड सिमेटिडिन विच इज एन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसके अगेंस्ट में हमें कौन सा एगोनिस्ट देना है, दैट इज हिस्टामिन, राइट, जो H1 एंड H2 दोनों को स्टिमुलेट करता है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हिस्टामिन को एंड देन वी आर गोइंग टू इंजेक्ट हिस्टामिन। ठीक है, यहाँ पे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन का डिस्कशन कर देता हूँ, दैट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड टू कंप्लीटली ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे हिस्टामिन। ओके, देन अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है H1 blocker, that is mepyramine, then you can give mepyramine. If you want to demonstrate the action of H2 blocker cimetidine, then you can give cimetidine, and then following that again you will give what, histamine. But here this time there will not be loss of complete response, only partial response will be lost. Why? Because still the other receptor is active. So whenever you are giving histamine and you want to completely block it, then you will have to give both H1 and H2 blockers, both you have to give. Okay, तो हम एक एक करके देंगे। सो सबसे पहले लेट्स गो विथ H1 ब्लॉकर दैट इज मेपाइरामिन। सो हमने मेपाइरामिन को सिलेक्ट किया एंड देन लेट्स इंजेक्ट मेपाइरामिन। देन अगेन इसके बाद हमें देना है एगोनिस्ट दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन को सिलेक्ट किया एंड हिस्टामिन को फिर से इंजेक्ट किया। अब आप देख सकते हो कि रेस्पॉन्स हिस्टामिन का प्रेजेंट है बट इट इज कंपैरेटिवली लेस फ्रॉम द प्रीवियस रेस्पॉन्स। ओके, तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमने H1 को तो ब्लॉक कर दिया है बट H2 को ब्लॉक नहीं किया, जिसके कारण स्टिल वी आर गेटिंग response of histamine. Now let's give the remaining blocker that is H2 blocker. So हम सिमेटिडिन को सिलेक्ट करेंगे एंड सिमेटिडिन को हम इंजेक्ट करेंगे। Following that again we are going to give histamine, but this time we are not going to get any effect. Let's see. Okay, so you can see now there is no effect of histamine. Why? Because now both H1 receptors and H3, both H1 receptors and H2 receptors are blocked by mepyramine and cimetidine respectively. So that is the reason why you are not getting any effect now. So this is complete block of action of what, histamine. So with this we have completed the normal questions. Now let's go to the specific questions one by one, जो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो नॉर्मली आपको मिलता है। So for this let's take a new slide once again. So the question is to show the biphasic response and vasomotor reversal of Dale. Select one drug which will stop the reversal and no effect of the agonist will be seen on blood pressure. Then question 3 of this question is, the third part of this question is, demonstrate vasomotor re-reversal of Dale. So for this we will have to do two times. Okay, so for the first two parts we are going to do it in one slide, and for the third part we are going to again select the new slide, and then we are going to perform this in the new slide. Okay, so let's see what are the steps for this, what you have to do. So सबसे पहले biphasic response के लिए
हमें क्या करना है इसमें, हमें कुछ भी सोचने का कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। डायरेक्टली वी विल सिलेक्ट एपिनेफ्रिन एंड वी विल इंजेक्ट। तो आप देख सकते हो बाइफेजिक रिस्पॉन्स हमें मिल गया। इसका रीजन जो है आपको पता होना चाहिए। इट वाज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, डेफिनेटली डू चेक दोज वीडियोस वंस। सो फर्स्ट वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड बाइफेजिक रिस्पॉन्स। अब हम इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या था फर्स्ट पार्ट में, टू डिमॉन्स्ट्रेट वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक है, तो वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल में हमें क्या चाहिए, जो ग्राफ है वो हमें नीचे की तरफ चाहिए, राइट। सो अब हमें ये वाला जो एक्शन है वो ब्लॉक करना है। उसको कैसे ब्लॉक करेंगे, ये एक्शन मेनली किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है मेनली बिकॉज ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर, राइट। सो हम अब इसके बाद देंगे अल्फा ब्लॉकर, दैट इज फेंटोलामिन। फेंटोलामिन सेलेक्ट किया, इंजेक्ट किया फेंटोलामिन। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू गिव epinephrine. Now we are going to get only depressor response because alpha 1 receptors are blocked, but beta 2 receptors are still present and active. Okay, so next we are giving epinephrine. सो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ हमें डिप्रेसर रिस्पॉन्स मिला है। सो दिस इज बेसिकली वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये कंप्लीटली ब्लॉक करना है। ठीक है, इस इफेक्ट को हमें कंप्लीटली ब्लॉक करना है। तो अब इस इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए आप जानते हो कि अब यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज फॉल इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इट इज बिकॉज ऑफ विच रिसेप्टर, बिकॉज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, राइट। सो इन दिस केस बीटा 2 रिसेप्टर, so now what we are going to do is we are going to select a non-selective beta blocker to completely block this action also. So what is that non-selective beta blocker? Let's go to this side. Yes, this is propranolol. So we are selecting propranolol and then we are going to inject propranolol. Following that, again, what we are going to do after this, we are again going to inject epinephrine. अब अभी तक आप देख रहे हो कि किसी में भी मैंने डोज को चेंज नहीं किया है, क्योंकि as far as I remember, and you should also remember, in the past two videos when I was discussing about the specific questions, there are only two questions where you need to change the dose. In rest of the cases, you can directly go with the default dose. आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको ड्रग सेलेक्ट करना है और इंजेक्ट करना है। ठीक है, so next हमने एपिनेफ्रिन सेलेक्ट किया है and then let's inject epinephrine. So now you can see there is no response at all, right? So now we have got the complete block of action of epinephrine. So with this we have completed the first two parts of this particular question. Now for the third part we are going to again start a new slide for demonstrating vasomotor re-reversal of Dale. Okay, so vasomotor re-reversal of Dale के लिए we are going to select once again the new slide. Let's go to new. अब वासोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल में जैसे आपने देखा था, रिवर्सल ऑफ डेल में हमें ग्राफ नीचे की तरफ मिला था, तो री रिवर्सल में डेफिनेटली क्या होगा, हमें ग्राफ ऊपर की तरफ चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम कौन से ड्रग को पहले देंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव प्रोपेनोल, जो ब्लॉक करेगा एक्शन किसका, एपिनेफ्रिन का। सब सेम, ये द सेम थिंग, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एपिनेफ्रिन। वी आर सेलेक्टेड एपिनेफ्रिन, वी आर गिवन एपिनेफ्रिन, यू कैन सी बाइफेजिक रिस्पॉन्स, करेक्ट। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे beta blocker instead of alpha blocker, remember, because we need to now reverse the action. Okay, reverse करना है, reversal, but vasomotor vasomotor reversal जो है that is vasomotor reversal of Dale का reverse। ठीक है, so now we are going to inject propranolol which is beta blocker. Let's select beta blocker, that is propranolol, and let's inject beta blocker propranolol। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद again we are going to give the agonist, so we are going to select epinephrine once again and then inject। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेस्पॉन्स है ये एक प्रेशर रेस्पॉन्स है, यहाँ पे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल vasomotor re-reversal of Dale. And remember, when you're doing this third part, you need to ask the invigilator that can I start fresh and demonstrate this. Usually this question doesn't come at the end, but suppose if you are unlucky enough, then you might get this third part also. Usually the questions in the first two parts only, that is to demonstrate biphasic response and to demonstrate vasomotor reversal of Dale and then block the action of epinephrine. But suppose if you are unlucky enough and you get this question also, then you will have to start a new slide. For that, you will have to ask the invigilator and then you have to begin with the new slide. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट फोर डिफरेंट agonists along with appropriate dose which will cause fall of blood pressure. So very simple. Let's take a new slide so that you can understand it.
सो हमें चाहिए एगोनिस्ट जो फॉल इन ब्लड प्रेशर कर रहा है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ सोचने जैसा कुछ तो है नहीं, डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज आइसोप्रिनालिन। यू कैन सी दिस फॉल इन ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम देंगे एसिटाइल कोलिन, दैट इज फॉल इन ब्लड प्रेशर अगेन। उसके बाद हम देंगे हिस्टामिन, दैट इज गोइंग टू कॉज फॉल इन ब्लड प्रेशर। सो यहाँ इन तीनों ड्रग्स तक तो सभी कर लेते हैं बराबर। बट जो चौथा वाला है, as you remember, I have already mentioned in the previous class, that is low dose epinephrine. When you are giving low dose epinephrine, only the highly sensitive receptors, that is the beta receptors, are going to act. So only beta 2 gets activated, and as a result it causes vasodilation, whereas alpha 1 is not active in low dose. So in that case we are going to get what? Vasodilation, and leading to that there will be decrease in the blood pressure. So we are going to give a lower dose of epinephrine. तो यहाँ पे हमने epinephrine को select किया, बट अब हम इसका डोज 2 नहीं रखेंगे, लेट्स मेक इट अ लो डोज, दैट इज 0.5. ओके, because if you give 2, that is the default selected dose, then you will get the biphasic response, and that is not the answer which we want, right? Now we want only fall in blood pressure, so we have selected 0.5 here, and next now inject. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ फॉल इन ब्लड प्रेशर आपको मिल रहा है, ठीक है। सो फॉल इन ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाट वी वांट. So what are those drugs? First we have given isoprenalin, then acetylcholine, then histamine, and then low dose epinephrine. So with this we have completed the second question also. Now the third question, it has got three parts. That is to select one agonist which cause rise of blood pressure but fall in heart rate. Then second part is select one agonist which cause fall of blood pressure and fall in heart rate. Third question, third part, that is select one agonist which will cause fall of blood pressure and rise in heart rate. Okay, let's see one by one. So for this again, let's take a new slide. So पहला वाला क्या था? We need rise in blood pressure and fall in heart rate. Remember ऐसा कौन सा ड्रग था? If you are not able to connect the concept and get the answer, in that case for these type of questions I would suggest you remember the drugs, because these are the questions which are very specific, and if you remember the drugs that will also do your work. But at the end you need to know what is the mechanism of action, how that increase in blood pressure is observed, and how there is a fall in uh, heart rate. So anyway you will have to know the concept, but for doing it fast you can remember the name of drugs also, that's it. So let's first give the first drug, that is norepinephrine. देखते हैं क्या इफेक्ट आता है. So we have given norepinephrine, and as the question has asked, we got increase in blood pressure and fall in heart rate. Okay. Next जो है both fall in heart rate and blood pressure चाहिए. So इसके लिए हम select करेंगे acetylcholine and then inject acetylcholine. तो हमें मिल गया fall in heart rate, fall in blood pressure. Okay. Next उसके बाद में जो क्वेश्चन था, in that case they have asked for agonist which is going to cause fall in blood pressure but increase in heart rate. So we are going to select isoprenaline. Let's see. Yes, there is fall in blood pressure and increase in heart rate. So these are the three answers which you need for that particular question. So with this we have completed this question also. Now let's go to the next one, that is to show the effect of histamine on blood pressure and try to completely block the effect. So this I have already mentioned when I was discussing the effect of agonists but antagonists. So let's just go through it once again. So for this again, I am going to select the new slide. So we have to show the effect of histamine, and then we have to block the effect of histamine completely. So first, definitely we are going to select histamine. We are going to inject histamine. Then इसके बाद हम कुछ भी ब्लॉकर दे सकते हैं. We can give either कुछ भी ब्लॉकर in the sense we can give either H1 or H2 blocker. Okay, not the other blockers. Muscarinic blockers, alpha blocker, beta blocker नहीं देना है. ठीक है. So let's give cimetidine this time to change things up little bit. So let's select cimetidine. This is H2 blocker. Okay. तो हमने सिमेट्रिडिन दे दिया. उसके बाद हम फिर से देंगे हिस्टामिन. यहाँ पे आपको पता है कि अब रेस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाएगा बट कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होगा. तो ये आप देख रहे हो रेस्पॉन्स तो कम हुआ है बट कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है. अब हमें इसे कंप्लीटली ब्लॉक करना है. तो हमने क्या दे दिया था ऑलरेडी, सिमेट्रिन तो हमने दे ही दिया था. अब हम नेक्स्ट देंगे H1 ब्लॉकर, दैट इज मेपाइरामिन. मेपाइरामिन को सिलेक्ट किया, मेपाइरामिन को इंजेक्ट किया. इसके बाद फिर हम देंगे histamine to show that its effect is completely blocked now, right? So we have selected histamine and then again we're going to inject histamine. Yes, यहाँ पे आप देख सकते हो now there is no effect of histamine because we have blocked the H1 receptors by mepiramine and H2 receptors by cimetidine. Okay, so with this we have completed this question also. So these are
these questions are very simple. If you know the steps, you can easily get 10 marks. All you need to know is the concept behind this, because the concept behind these questions are also asked during the Viva. Okay. Now let's go to the next question, that is to show one example of competitive antagonism using appropriate agonist and antagonist. तो यहाँ पे आप अगर याद करो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें हम एसिटाइल कोलिन को लेके चलेंगे, बट वी कैन यूज द अदर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट पेयर्स आल्सो. बट द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग एसिटाइल कोलिन इज दैट the next question is also related to acetylcholine. So in this case, you will have to remember only one particular drug, and just you have to remember the change in dosage, which you have to do while performing the different questions, right? So let's open the new one. So what we have to do, we have to do competitive antagonism. We have to demonstrate competitive antagonism. Okay. So सबसे पहले हम लेंगे एसिटाइल कोलिन नॉर्मली, दैट इज 5 माइक्रोग्राम पर केजी डोज, जो नॉर्मली सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट डोज. और let's inject that. Okay. Then after that we are going to give atropine, because it is the blocker. Okay. So atropine में आते हैं, again the default selected dose, that is 750 microgram per kg. We are going to inject atropine. ओके. अब इसके बाद हमें फर्स्ट दिखाना है कि एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव, बिकॉज ऑफ दिस एंटागोनिस्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू गिव द सेम डोज अगेन. तो एसिटाइलकोलिन में फिर से जाते हैं, एसिटाइलकोलिन को सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट हमेशा 5 माइक्रोग्राम पर केजी है. सो नेक्स्ट अगेन inject this, and what is the response which we are going to get? We are not going to get any response, right? Let's inject. Okay, so you can see there is no response. But यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है. We have to demonstrate competitive antagonism. So in this case, now again we are going to give agonist, but this time increasing the concentration of agonist, because in competitive antagonism, whenever we are increasing the concentration of agonist, it again displaces antagonist from the receptor and then mediates its own effect, right? So now we have selected acetylcholine, but now this time we are going to give an increased dose of acetylcholine. So let's give 150 microgram per kg, and let's see. Now you can see we have this effect of acetylcholine once again. Why? Because now, because of increase in the concentration of acetylcholine, it has displaced the atropine from those receptors, that is muscarinic receptors. So that is the reason why we are getting back the effect of acetylcholine. And with this, our question ends. That is the demonstration of competitive antagonism, right? So now you have to remember these doses. First acetylcholine 5, then atropine 750, then again acetylcholine 5, and then you have to change the dose of acetylcholine to a higher dose, that is 150 microgram per kg. पहले के 3 डोज तो आपको डिफॉल्ट डोज ही देना है, उसके बाद आपको इंक्रीज करना है, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वन ऑफ द toughest question, and where you can make some mistakes definitely. Usually people make mistakes here. So this is to demonstrate the nicotinic action of acetylcholine, and the second part of the question is to select one drug which will stop the nicotinic action of acetylcholine and no effect of agonist will be seen on blood pressure. So let's take the new slide for this. So यहाँ पे आपको dosage properly याद रखना है, because if you don't remember the dose, then you are going to do the mistake, and definitely your dog is going to die, and with that your exam will also end then and there itself, and you will get 0 out of 10. Okay, so let's start with acetylcholine, क्योंकि हमें demonstrate क्या करना है, हमें तो acetylcholine का ही nicotinic action demonstrate करना है, right? So let's select acetylcholine. So first dose is 5 microgram per kg. यहाँ पे कुछ चेंज वगैरह करना नहीं है. Let's inject. Okay. Then इसके बाद हम देंगे atropine. But now, if you remember from my previous video, we have to increase the dose of atropine. Okay. So we are going to give 1500 microgram per kg of atropine. ठीक है. What is the purpose of giving this high dose? Because when we are giving this 1500 microgram per kg, it is going to block uh, all the peripheral parasympathetic receptors, like all the muscarinic receptors in the peripheries, and that is the reason now when we are going to give increased dose of acetylcholine, it will reach the central nervous system, and then there it is going to act on the neuronal type of nicotinic receptors, leading to increase in release of both epinephrine and norepinephrine, that is basically the catecholamines, which will lead to increase in blood pressure, and that is what we call nicotinic action of acetylcholine, right? So now let's select acetylcholine once again,
but this time the dose will be high, that will be 750 microgram per kg. And now let's inject. So now you can see there is increase in the blood pressure, and this is what we call nicotinic action of acetylcholine. And how is it mediated? It is because of the release of catecholamines, and that those catecholamines, they are going to act on the alpha 1 receptor, leading to vasoconstriction. So now when we are asked to block this effect of nicotinic action, what we are going to do? We are going to block the action which is mediated by this alpha 1 receptors, right? So what we have to do? We have to give alpha blocker. So next, we are going to give phentolamine, that is 1000 microgram per kg, that is set default. So this we are going to inject. Okay. Following this, again, we have to give acetylcholine, but now the dose of acetylcholine will be the same which we have already given, right? So we have already given 750, and then we have given 5. Okay. So 750 plus 5, that is 755. So now let's give 755 microgram per kg of acetylcholine, and let's see whether we can still get the effect of acetylcholine, that is निकोटीनिक एक्शन मिलता है कि नहीं, या फिर क्या फॉल इन ब्लड प्रेशर मिलता है कि नहीं, दोनों में से कुछ भी मिल रहा है कि नहीं. लेट्स सी. So you can see now there is no effect. Why? Because alpha receptors are also blocked, and हमने तो पहले ही muscarinic receptor को block कर रखा है. Why? By with the help of atropine. So muscarinic receptors are also blocked, so we are not getting fall in blood pressure, and then now alpha receptors are also blocked, so we are not getting rise in blood pressure. So all totally we are not getting any effect now when we are giving acetylcholine. So with this, we have completed this nicotinic action also. So this is very important that you remember the dose here. Okay, first 5 microgram per kg of acetylcholine, then 1500 microgram per kg of atropine, then again acetylcholine, that is 750 microgram per kg. Then you give phentolamine, that is default dose, that is 1000 microgram per kg, and then again you are going to give acetylcholine, that is 755 microgram per kg. So with this, we have completed this question also. Now, the next question is to show the phenomenon of tachyphylaxis and to completely block the action of that particular drug. So you know the tachyphylaxis thing. What is the what is tachyphylaxis actually? When we are giving the same dose of the drug repeatedly, then we are getting a decrease in the response of the drug. So that is what we call as tachyphylaxis, and which is the drug in this list which is responsible for causing tachyphylaxis. If you remember, the drug if you remember, the drug which was responsible, which was actually showing tachyphylaxis, is ephedrine, right? So let's take a new slide once again. तो अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट देना है एफेड्रिन. वाई? एंड एफेड्रिन का सेम डोज ही हमें बार बार रिपीट करना है टू शो tachyphylaxis. सो हमने सेलेक्ट किया एफेड्रिन, 200 माइक्रोग्राम पर केजी ऑलरेडी सिलेक्टेड है. लेट्स गिव एफेड्रिन. फर्स्ट डोज हमने दे दिया, देन अगेन इट इज स्टिल सिलेक्टेड. नेक्स्ट क्लिक ऑन इंजेक्ट बटन अगेन, दैट इज 200 माइक्रोग्राम पर केजी, फिर से देंगे. Now you can see there is decrease in the response. Again फिर से हम inject button को click करेंगे. Further decrease in response. But you can see that it has not reached zero. Why? This is because ephedrine का जो tachyphylaxis phenomenon है, that is because of depletion of the neurotransmitters in the presynaptic vesicles. But its direct action on alpha receptor, that is alpha 1 receptor, is still present. So that is the reason, even though you are getting decrease in response, but it will not reach zero. अब हमें ये कंप्लीटली ब्लॉक करना है. तो इसे ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा ड्रग देने वाले हैं? व्हाई इज दिस एक्शन ऑब्जर्व? व्हाई there is increase in blood pressure? That is because of what? Vasoconstriction mediated by which receptor? Alpha 1 receptor. So in that case, now what we are going to give? We are giving alpha blocker. So what is that alpha blocker? That is phentolamine. ठीक है, phentolamine select किया, phentolamine को inject किया, and now let's again try giving ephedrine and observe whether there is any action or not. So you know already there will be no action, but just for the sake of explaining, I'm just giving the ephedrine just to show you. And in exam also you have to do, because you have to show that completely the effect of ephedrine is now absent. Okay, right? So ephedrine को हम select किया, and then we have given ephedrine. So now you can see there is no effect of ephedrine. So till this you are going to do so as to get full 10 marks. This first part is the phenomenon of tachyphylaxis, and from here you have blocked the action of ephedrine completely. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, that is to select 3 different agonists along with appropriate dose which will cause rise of blood pressure, and then the second part is to select appropriate blocker to block their BP elevation action. Okay, quite a simple question. So let's take the new slide once again. One,
राइट। सो हमें चाहिए इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, राइट। सो फर्स्ट हम देंगे नॉरएपिनेफ्रिन, ओके, we are getting increase in blood pressure. Then let's see which one we can give. Then okay, then we can give ephedrine. Again you can see there is increase in blood pressure. Then उसके बाद हम देंगे epinephrine. Again you can see there is increase in blood pressure. अब हमें इन सब का जो ब्लड प्रेशर एलिवेशन एक्ट है उसको रोकना है, मतलब अल्फा 1 मीडिएटेड एक्शन को रोकना है। सो वी नो ऑलरेडी वी हैव अल्फा ब्लॉकर, दैट इज फेंटोलमीन। फेंटोलमीन दे दिया, बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। अब ये ब्लॉक हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगेन वी हैव टू गिव ऑल दीज एगोनिस्ट, राइट। सो लेट्स गिव वन बाय वन द एगोनिस्ट। फिर से नॉरएपिनेफ्रिन सेलेक्ट किया, यू कैन सी नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन नॉरएपिनेफ्रिन, व्हाई? बिकॉज अल्फा इज ब्लॉक्ड। देन नेक्स्ट is ephedrine, no effect, again the alpha receptors are blocked. Then next is epinephrine। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ फॉल इन ब्लड प्रेशर है, क्योंकि अल्फा तो ब्लॉक हो चुका है बट बीटा 2 रिसेप्टर्स आर स्टिल एक्टिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग फॉल इन ब्लड प्रेशर। सो विद दिस our question ends, for the answer for this particular question ends. First you have given all the three agonists which caused increase in blood pressure, then you have given the blocker, and then again you have given the agonist, so that you can show that now there is no elevation of blood pressure even after giving the agonists, right? So with this question also is done. Now let's discuss the ninth question, that is basically to identify the unknown drug. So for this also we will take a new slide. Let's start fresh. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अननोन ड्रग। तो अननोन ड्रग कैसे फाइंड करना है? रिमेंबर द स्टेप्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, ओके। सो सबसे पहले हमें देना है सारे एगोनिस्ट, ओके, एक के बाद एक सब एगोनिस्ट दे देंगे। एपिनेफ्रिन, ओके, इंजेक्ट। उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन, देन इंजेक्ट। उसके बाद एक्सोपिनालिन, देन अगेन इंजेक्ट। Then same we are going to do for others, acetylcholine, then we are going to give histamine. Now one more agonist is left, that is ephedrine. Okay, so with this we have completed the फर्स्ट स्टेप, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द एगोनिस्ट। अब इन सब के ग्राफ आप देख लो, ऑलरेडी ये आपको तो याद होगा ही बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इट फॉर द अदर क्वेश्चंस, राइट। नाउ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द अननोन टू सी वेदर देयर इज एनी इफेक्ट और नॉट। ओके, लेट्स सेलेक्ट अननोन। आप एक बार फिर से देख लो ड्रग्स और उसका इफेक्ट, सो दैट इफ इट वाज एगोनिस्ट इन दैट केस यू कैन इमीडिएटली से व्हिच इज द पर्टिकुलर ड्रग, राइट। सो हमने अननोन को सिलेक्ट किया एंड देन लेट्स इंजेक्ट अननोन। ओके, सो यू आर नॉट गेटिंग एनी इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। दिस इज नॉट एन agonist but an antagonist, okay। So the unknown which we are having right now is what? Is an antagonist। अब कौन सा antagonist है? Let's find it out one by one by giving the different agonist and then trying to block the effect of that particular agonist by this unknown drug। So let's first start with epinephrine, that is the adrenergic drug। Let's give epinephrine once again, ठीक है। अब इसके बाद एपिनेफ्रिन में आप देख रहे हो कि देर इज नो चेंज इन इफेक्ट, राइट, कुछ चेंज हुआ नहीं है, वही बाइफेजिक रिस्पॉन्स आपको जैसे पहले मिल रहा था फिर से मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अननोन है ये अल्फा ब्लॉकर भी नहीं है और बीटा ब्लॉकर भी नहीं है। तो अब इसके बाद में क्या हम नॉर एपिनेफ्रिन एंड एफेड्रिन या आइसोपिनेलिन ट्राई करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेटली ये अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर तो है नहीं, तो उनके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला। जस्ट टू स्टिल जस्ट इफ यू वांट टू कंफर्म इट, लेट्स गिव वन मोर ड्रग अगेन, नॉर एपिनेफ्रिन देंगे, ठीक है। आपको फिर से वही नॉर्मल रिस्पॉन्स ही मिलेगा नॉर एपिनेफ्रिन का, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स, ओके। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कौन सा? एसिटाइलकोलिन, जो मस्कारिन रिसेप्टर पे काम कर रहा है। सो एसिटाइलकोलिन को हमने इंजेक्ट किया, आप देख सकते हो एसिटाइलकोलिन का भी सेम इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, क्या है? ये मस्कारिन ब्लॉकर भी नहीं है। अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक ग्रुप, दैट इज हिस्टामिनिक ग्रुप, राइट। सो अब हम देंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन को सिलेक्ट किया और इंजेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि अब हिस्टामिन का जो इफेक्ट है वो कम हो चुका है। और ये इफेक्ट कम हो गया है, इसका मतलब क्या है कि इट इज आइदर H1 ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर, जो हमारा अननोन ड्रग है। अब उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं?
अब आप रिमेम्बर करो, इसके बाद में मैंने क्या स्टेप बताया था। अब इसके बाद आपको आइदर H1 ब्लॉकर या H2 ब्लॉकर, इन दोनों में से कोई एक जो आपको पसंद है आप उस ड्रग को दे सकते हो। तो मैं H1 ब्लॉकर को ही देता हूँ। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट मेपाइरामिन एंड देन इंजेक्ट मेपाइरामिन। ओके, एंड अब इसके बाद फिर से हम देंगे हिस्टामिन। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हिस्टामिन का इफेक्ट स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो और हमने क्या किया है, हमने मेपाइरामिन भी दे दिया है, ठीक है, प्लस अननोन भी दे दिया है। तो इसका मतलब अगर हमें स्टिल हिस्टामिन का कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन सम ऑफ द हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स आर स्टिल स्पेयर्ड। तो यहाँ पे हमने मेपाइरामिन तो दे दिया है, तो H1 रिसेप्टर्स का तो ऑलरेडी ये तो ब्लॉक हो चुका है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ H1 रिसेप्टर्स। बट नाउ स्टिल वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, दिस मीन्स H2 रिसेप्टर्स आर स्टिल स्पेयर्ड। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ये अननोन ड्रग भी H1 ब्लॉकर है। अगर सपोज ये अननोन अननोन ब्लॉकर, अगर सपोज ये अननोन ड्रग H2 ब्लॉकर होता, दैट इज सिमेट्रिलिन होता सपोज ये, सो इन दैट केस हमने H1 तो H2 हमने तो पहले ही ब्लॉक कर दिया है, अब जब हमने मेपाइरामिन दिया तब H1 भी ब्लॉक कर दिया है। तो इन दैट केस व्हेन वी गिव हिस्टामिन वी विल गेट नो रिस्पांस, राइट, बट यहाँ पे हमें स्टिल रिस्पांस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि H2 ब्लॉकर स्टिल एक्टिव है, सॉरी H2 रिसेप्टर्स आर स्टिल एक्टिव, एंड दैट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन these unknown drug and meperamine both are obviously, meperamine is H1 blocker and the unknown drug is also an H1 blocker. So let's reveal what is unknown drug. And for revealing, you cannot reveal it yourself. It will be revealed by the invigilator. But for showing you that the answer is meperamine, let's just try to reveal it once again. So here we have selected the unknown and let's reveal. So here you can see the unknown drug is mepiravine. That is what we have reached to this particular conclusion, right? Before I have revealed the drug. So with this, we have completed all the different types of questions which can be asked for dog BP experiments during CAL, during your practicals basically, and all these questions are 10 marks questions. So if you are thorough with these questions, you can easily get these 10 marks, and you need to remember some of the points which I have already discussed in detail in the previous videos, so that you can answer those questions which are being which will be asked to you during Viva. So with this, I have completed the hands-on demonstration also. So I hope you understood how to go through this interface of that particular software, that is EP drug, how to select the drug, how to inject the drug, and following the injection of a particular drug, you have to give saline. In this tutorial, I have skipped that step because even if you don't do that, you are still going to get the same effect, right? But whenever you are doing it in exam, you have to do the administration of a saline also, so that you can tell it in proper way. So with this, I come to the end of this particular video. So if you like my content, please do like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Thank you guys.